समृद्धि और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है यश ने, रोहित ने और यशपाल ने। और इससे पहले कि मौजम वीडियो बताया, मैं नाम इस तरीके से लेना चाहती थी कि यश, यशपाल और रोहित ने, तो मौजम ने कहा नहीं ऐसे नहीं, यश, रोहित और यशपाल बोलना है। एनीवे गाइस, अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जो हमें सजेस्ट की और टाइटल बताएंगे। मौजम टाइटल है टूरिंग न्यू नागपुर टू मुंबई समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस इन ए मर्सिडीज। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें ऑटोकार इंडिया के चैनल को। उसके अलग में ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गाड़ी चेक करें। This is the Mercedes-AMG E63S and it has a very important role to play in today's road test. And I mean road test in a very literal sense. Welcome to the brand new Nagpur to Mumbai expressway, officially called the Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg. Now we've got exclusive time on it, and let me tell you already, it's quite the road. Built to connect Maharashtra's sub-capital Nagpur and capital Mumbai, the Samruddhi Mahamarg is a 701-kilometer, 6-lane access-controlled expressway. For perspective, the Samruddhi Mahamarg is 7 times longer than the Mumbai-Pune expressway. The Samruddhi Mahamarg promises to cut travel time between Nagpur and Mumbai from the current 16 hours to just 8. At max attack and without traffic and without restrictions, the car I'm in would need 2 and something hours. For the uninitiated, the Mercedes-AMG E63S is an E-Class dialed up to 11. It's got 4 doors, 5 seats, and some say it's among the fastest ways to drop your kids to school. Its hand-built 4-litre twin-turbo V8 engine makes 612 horsepower and 850 Newton-meters of torque, and that power goes to all 4 wheels or 2 if you so choose. The Samruddhi Mahamarg is designed for speeds of up to 150 kilometers an hour, but the official speed limit will be 120 kilometers an hour. Now, if you do the maths, that's about 4 seconds of very intense acceleration in this E63S. Wow. At places, the Samruddhi Mahamarg is wide enough and flat enough to actually double up as a runway. Now, theoretically, and I'm emphasizing theoretically, this is a place where you can actually max out a car like the E63S. In this very car, that's over 300 kilometers an hour. But just don't get any ideas. It's patently dangerous to try any antics on a public road, especially a high-speed one as this. Any misdemeanors will be caught on the network of CCTVs en route. It's estimated that 30 to 35,000 vehicles will use the expressway daily. Today though, I have a large chunk of it all to myself. So, excuse me if I'll be giving in to temptation every now and then. The drive acquainted me with some of the salient features of the route and reacquainted me with some of the highlights of the E63S. They cleverly place sound barriers near habited areas, and that's just as well because this E63S is very proud to be loud. The AMG really roars. In fact, the animals around might be wondering what's that angry beast in their neighborhood. Now, on the subject, the Samruddhi Mahamarg is unique for animal overpasses that actually allow wildlife to cross from one side to the other without needing to cross the actual road itself. The strategically positioned overpasses provide safe passage for animals, almost like a walk in the park, while vehicles zip by below at 120 kilometers an hour. And there's a lot of amenities for road users in the works as well. Over time, the Samruddhi Mahamarg will have 21 wayside amenities with food courts and petrol pumps,
and importantly, each of them will have EV charging stations. So it's going to be quite a future-proof route. Now, as the visuals would have established already, the Samruddhi Mahamarg will be largely straight with gentle curves, requiring minimal input at the steering wheel. If there's a road built to test the advantage of ADAS features like adaptive cruise control and lane keep assist, this is it. The most steering you'll have to do is on the vast interchanges, of which there'll be 22. Interestingly, the toll collection booths will only be on the exit and entry ramps and not on the main expressway itself. When the road is fully functional, it'll be absolutely ready with FASTag. So this will be a fully seamless experience. But I'm going to do a ceremonial stop. I want that toll receipt for posterity's sake. Before you ask, the toll has been set at 1.73 rupees per kilometer for a car. So an end-to-end journey will cost about 1200 rupees in tolls. There you have it. Back on the expressway, there's more to make of road and car. With the cruise control set to 120 kilometers an hour, which is the speed limit for this road, this E63S doesn't feel all too different from the bog standard E-Class. It's really comfortable and feels like a car that'll do this journey all day. And what can I say about the road itself? It's an absolute world apart from the current highway between Nagpur and Mumbai. And if you actually zoom out, it's not just the travel time saved between these two major cities, but what this road means for all of Maharashtra. It runs through important centers like Amravati, Aurangabad, Ahmednagar and Nashik and will eventually connect 26 talukas and 392 villages. This road really has the potential to change the face of Maharashtra, with as many as 18 townships planned along the route. The Greenfield Expressway will also be green, with 11 lakh trees proposed to be planted along the route. If there's anything to bring up about the road, it's that the concrete surface isn't as smooth as an asphalt road would have been. Then again, this road will require less maintenance, and engineers say the surface will also smoothen as the road comes into use. And the good thing is that date is coming soon. The Nagpur to Shirdi section of the Samruddhi Mahamarg opens in May 2022, and work is on in full swing to ensure the entire 701-kilometer road, including a 7.7-kilometer tunnel between Kasara Ghat and Igatpuri, is open to the public by May 2023. The Samruddhi Mahamarg is one of Maharashtra's flagship infrastructure projects and one very close to Shri Eknath Shinde, Minister for Urban Development and Public Works in the government of Maharashtra, who took a tour of the road in the quiet confines of the all-electric Mercedes EQC. ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मर्सिडीज कार है और ये वर्ल्ड क्लास कार है, वर्ल्ड क्लास रोड पे चल रही है। ये रोड ही वर्ल्ड क्लास बनाया है, इसे मतलब लोगों के लिए एक बहुत ही एक स्मूथ राइड है। Here's the Honorable Minister on the scale of the job and getting it done within 5 years. सबसे पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, हाईवे होता है, तो उसको लैंड एक्विजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसमें इस समृद्धि हाईवे के लिए जो लैंड एक्विजिशन हुआ है वो रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। पहले तो देखो शुरुआत में कई लोगों का अपोज था, यहाँ पर काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे, रेजिस्टेंस था और फिर उनको बताया कि वो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर मैंने खुद एज ए विटनेस मैंने साइन किया खुद, उसको विश्वास दिलाने के लिए। और उसका विधानसभा असेंबली में भी कई लोगों ने पूछा कि शिंदे जी आपने तो कुछ नया ही शुरू कर दिया है, तो मैंने बोला ठीक है शुरू किया है लेकिन उसका फ़ायदा होगा ज़रूर। फिर वो मेरा आइडिया जो है काम आ गया और लोगों को मैंने कहा कि आप आपकी ज़मीन दीजिए और आपके अकाउंट में विदिन 2 आवर्स आरटीजीएस के माध्यम से आपके पैसे जमा हो जाएंगे। हम लोग चले गए, 2.5 घंटे में मुझे फ़ोन आया उस फार्मर का, पैसे जमा हो गए। ऐसा एक भरोसा जो ट्रस्ट है वो डेवलप होते गया। फिर कहीं ये ऐसा मैसेज बहुत सब लोगों में गया कि ये समृद्धि के पैसे जो है वो समय पे मिल रहे हैं। फिर लोग खुद ही आ गए
ज़मीन देने के लिए। और फिर 1 साल के अंदर हम लोग ने पूरा लैंड एक्विजिशन किया रिकॉर्ड टाइम में। ये रिकॉर्ड है। और जैसे आप कहते हैं कि किसी भी शहर और ज़िला हो, राज्य हो, उसके जो रोड अच्छे होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी जिसकी अच्छी होती है, उसकी जो प्रोग्रेस है बहुत फास्ट होती है। मुझे एक याद आ रहा है कि जैसे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का उनका एक कोट है। उन्होंने कहा था, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये तो मैंने नितिन जी से सुन We also got an insight on the eco-sensitive measures of the project from Shri Radheshyam Mopalwar, Vice Chairman and Managing Director of the Maharashtra State Road Development Corporation. See, the most important thing is, when it comes to environment and ecology, forest, trees, one thing we have done that we were told to plant around 1 million plants. What we are doing is we are actually planting 3.3 million saplings and almost various kinds. So we are in complete consultation with Botanical Survey of India and in the local forest department as well as the state forest department. And in consultation with that, we have taken the local prajati, what they call local species, and we have created a plan. We are going to spend almost 900 crores on only environmental development of this road. Apart from plantation, which is, as I said, 3.3 million saplings will be there, right from creepers, bamboos to local varieties, 3-tier plantation, all these things will be there. But what is more important is basically for wildlife also. We are partnered with the Wildlife Institute of India at Dehradun, and whatever was suggested by the High Power Committee of the state as well as by the Wildlife Institute of India, we have actually factored those in both in the forest areas, in the sanctuaries and non-focus areas also. What they said, focus areas for wildlife and non-focus areas for wildlife. We have now almost in 700 kilometers 76 wildlife underpasses and 8 overpasses which are constructed for the first time of this kind. So we have been very, very particular that this expressway must become extremely environment friendly. Shri Anil Kumar Gaikwad, Joint Managing Director at the Maharashtra State Road Development Corporation, shed some light on traffic surveillance measures and had a word of warning for anyone planning to speed. As a part of ITMS, there will be surveillance cameras along the expressway, and our team will be monitoring that. High-speed vehicles will be penalized. So there is no obstruction on entire 701 kilometer stretch, because there are 2 toll stations on the main carriage. One is at Nagpur, Shumadka, and another is at Thane. So 700 kilometer stretch is without any obstruction. So there may be temptation for the drivers to drive at the fast speed, but due to all these surveillance and all that on the expressway, nobody will drive at higher speeds. They will be caught and will be penalized. After a fun day out, I have to say that the Samruddhi Mahamarg really is a road for all of us to be proud of. That it'll shrink distances and speed up movement is a given, but at a larger level, it has the potential to fast-track the development and prosperity of the regions it connects. It really has been an honor to drive on what can only be described as a world-class road. बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो वीडियो में जो है ना, मेरा ख्याल है कि आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी जिसकी हम तारीफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मर्सिडीज़ की ही बात कर लेते हैं। वाकई मर्सिडीज़ तो वैसी बहुत खूबसूरत गाड़ी है ना, बेशक इसका पुराना मॉडल भी ले लेना, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो एक कॉन्सेप्ट है वीडियो का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि गाड़ियों के साथ रोड अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आता है। बट नो डाउट ये जो 700 अबव का एक स्ट्रेच है, बहुत ही एक अच्छा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो टाइम है उसमें वो बहुत ज़्यादा बचत लेकर आता है और आप एक अच्छा आपका एक सफ़र हो सकता है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ऐसे रोड्स पर वो ये होता है कि आप मतलब स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, कोई आपके रास्ते में कोई हर्डल नहीं उस तरह से आती।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हम कहेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए एक हम कहेंगे कि ख्याल रखा गया उस चीज का, और जो ओवर पासेस हैं वो बनाए गए एनिमल्स के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा बना। अच्छा, वैसे तो जब भी वीडियोस जो है वो यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की देखते हैं, तो मैं एक सवाल लाजमी पूछता हूँ जो आज मैं पूछूंगा कि बाइक्स चढ़ने की इजाजत होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता यार। नहीं, वैसे अगर इंडिया में देखे तो हाईवेज जो हैं, जो यानी कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, उसमें भी बाइक्स जो है वो जाने दे रहे थे, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, मे बी क्या नाम लेते हैं, उनसे भी टूल वगैरह अगर इकट्ठा करें तो। हाँ, मैं वही बात करने लगा था। काफी मुझे ज्यादा लगा, मतलब पर किलोमीटर अगर चार्ज किया जा रहा है, बट आई थिंक अगर जो पहले 16 आवर्स का एक आपका एक स्ट्रेच था, हाँ बिल्कुल, वो आपका हाफ में हो गया, तो मे बी फिर भी आपको थोड़ा सस्ता पड़ता होगा अगर पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है तो भी मे बी, क्योंकि मुझे 1200 सच में बहुत ज्यादा लगा है। नहीं, अगर वैसे अगर देखा जाए ना तो नो डाउट ज्यादा तो है, लेकिन अगर आप बाय रोड जाते हैं तो बाय रोड आपको बहुत ज्यादा हर्डल्स भी फेस करनी पड़ती है। वो आप कह ले कि आपका 16 घंटे का सफर किसी ना किसी वजह से 20 घंटे तक भी पहुंच सकता है, तो लेकिन बाय रोड नहीं तो क्या बाय एयर जा रहे हैं? नहीं, ये तो एक तरह की आप कह लेना मोटरवे है, ठीक है ना। मैं बाय रोड मैं दूसरे जो नेशनल हाईवेज होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ यार, इतना तो हर कोई समझ जाता है, आप नहीं समझती बस। तो उससे उस पे आपको टोल टैक्स भी जगह जगह देने पड़ते हैं, जैसे ही एक जिले से दूसरे जिले में, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ इस तरह ही होता है, एक जिले से दूसरे जिले में एंटर होते हैं तो आपको टोल टैक्स जो है वो देना पड़ता है। तो अगर फिर उसके बाद टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 16 घंटे पे भी 16 घंटे के हिसाब से फ्यूल लगेगा, 8 घंटे पे 8 घंटे के हिसाब से फ्यूल लगेगा, तो ये चीज फिर मुझे लगता है एडजस्टेबल जो है ना वो है यहाँ पर। बिल्कुल, फ्यूल के लिहाज से तो मैं बात करी कि हो सकता है कि वो महंगा पड़ सके, लेकिन जैसे मौसम बात करके एक जिले से दूसरे में जाते हुए तो भी आपको जो है ना वो टोल वगैरह पे करके यहाँ पर सस्ता पड़ जाता है, रादर देन जब आप मोटरवे से आते हो आपको मोटरवे पे ज्यादा पे करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे वैसे ये एक है कि अगर आप जीटी रोड से जाते हैं ना पिंडी, तो आपको 275 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मोटरवे से जाते हैं तो आपको 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है वहां से ट्रेवल करना पड़ता है। मोटरवे और जीटी रोड के हाँ यानी कि जो रूट में 100 किलोमीटर का फर्क है, पे भी ज्यादा करना पड़ता है, और अगर आप रस्ते से कुछ खाते हैं तो वो भी आपको डबल पे करना पड़ता है। भाई फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन ये कि अच्छी चीज मुझे लगी कि बीच में जो ई व्हीकल्स हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है, और आपको अब स्टेशन जो हैं उनके लिए भी वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि जो लोगों के लिए जो सुविधा है ना वो काफी ज्यादा है। अच्छा, एक बात जो मैं पूछना चाहूंगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो एक्चुअली जब से हम लोग वीडियोस देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं नितिन गडकरी जी की वीडियोस देख रहे हैं, तो अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखी है इसमें ये बताया गया कि जो आई थिंक स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नितिन गडकरी जी जो फिर रोड्स बनाते हैं वो कौन सी वाली, वो स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करते हैं या विद इन सिटीज जो होती हैं, या मतलब उनके बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं कि जो स्टेट्स के रोड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हैं वो अलग होते हैं, और जो क्या नाम लेते हैं एक पूरा मुल्क है उसके अलग होते हैं। बेसिकली आप ये पूछना चाह रही हैं? या मुझे ये मतलब जो नितिन गडकरी हैं उनके अंडर ही सब काम करते हैं? मेरा तो ख्याल है वैसे कि ये उनके अंडर ही सारे काम करते होंगे। लेकिन प्लीज आप जरूर कंफर्म कीजिएगा, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। और दूसरा एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी वो थे दरख्त बहुत ज्यादा लगाए गए, और वो सबसे अच्छी चीज है क्योंकि दरख्तों से एक तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, और मुझे लगता है कि खूबसूरती भी बहुत ज्यादा नजर आती है बिल्कुल। और फिर जो आस पास के जो गांव है जो कि 392 या 95 इतने जो गांव हैं उनके लिए ये जो मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी बात और एक अच्छी चीज है, एक तरह से देखें तो खुशखबरी है उनके बिल्कुल सही बात है। और दूसरा मैं यहाँ पे जो है ना एक और बात करना चाहूंगा कि जो शायद मुझे गलत लग रही थी या सही भी लग रही थी, दोनों जो रोड्स बनी थी उसके बीच में रास्ता छोड़ा था वो थोड़ा सा गहरा सा मुझे लग रहा था, जैसे वो जो है ना या तो वो कोई पानी के लिए बनाया गया या बरसात जब हो तो जो बरसात का पानी है वो उसके थ्रू जो है वो जाए, वो मुझे कुछ इस तरह का लग रहा था कि वो जो है बनाया गया है। फिर उसके बाद एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि अक्सर हमारे यहाँ पर मसले मसाइल आते हैं और 4-5 साल उसमें ही गुजर जाते हैं लैंड एक्विजिशन में, कि जिस तरह लोगों को पेमेंट की गई विद इन 2 आवर्स या 3 आवर्स जो है जो उनके अकाउंट में पैसे आ गए
नहीं, पैसे उनके अकाउंट में आ गए और एक साल में इतना लंबा स्ट्रेच जो है वो इन्होंने एक्वायर कर लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि इतना लंबा अगर स्ट्रेच अगर बात करें ना तो आपको कई साल, जो क्या नाम लेते हैं, ऐसे मुल्क है जहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, वहाँ पे कई साल आपको लग जाते हैं। बिल्कुल। और वैसे मुझे इंटरचेंज वाला जो एक शॉट था वो बड़ा खूबसूरत लगा, वो जो बहुत गोल था ना, एग्जैक्टली। और मतलब जो एरियल व्यू था ना वो बहुत खूबसूरत आ रहा था, शॉट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन ये मर्सिडीज में मैं थोड़ी तारीफ करना चाहती हूँ क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत थी, उसका इंटीरियर बहुत ही अंदर से स्पेशियस लुक आ रही थी, तो बहुत अच्छा था। वैसे कभी कभी मतलब वाकई में दिल करता है यार आपके पास ऐसी गाड़ियां होती। अच्छा, वैसे जो है ना कुछ कंपनी, जो पुरानी कंपनी है जैसे मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, या इस तरह की जो कंपनीज हैं, उन्हें देखे ना वाकई वो गाना है ना, वो जो करीना कपूर का गाना है, और 10 किन्नियां तारीफां चाहिए तेनू, वो बंदा जो है ना इन गाड़ियों को देके कह सकता है। ओके, बट आप जरूर बताइएगा आप में से आप मतलब सबसे ज्यादा फेवरेट वाली गाड़ी कौन सी है, मतलब ऑडी और मर्सिडीज में से मैं पूछना चाहती हूँ, जरूर बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में। और जानने से पहले मैं मोहतम से पूछना चाहूंगी मोहतम कौन सी है? ऑडी। मेरी भी वैसे ऑडी है, लेकिन ये कि मर्सिडीज को देखकर भी अच्छा लग रहा था, बड़ा हमारे पास ऑडी है ना जो मर्सिडीज को देखकर चले ख्वाहिश तो कर ही सकते ना, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। होने के लिए ना आपको मतलब अच्छी रोड भी फिर होनी चाहिए, अच्छी रोड भी होनी चाहिए, घर भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपकी गाड़ी इजीली पार्क हो, वरना लोग जो है ना उस पे स्क्रैच पार्क कर जाएंगे। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।